जय सद्गुरुदेव, जय पच्चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली। तस्माध्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू अपनी बुद्धि परमात्म तत्व में स्थिर करना चाहता है तो अपनी इंद्रियों पर दो प्रकार से नियंत्रण कर। प्रथम तो पाप कर्मों में प्रेरित होने से पहले ही कछुआ जिस प्रकार अपने अंगों को खतरा होते ही समेट लेता है, उसी प्रकार इंद्रियों को समेट लेने की आदत बना ले। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः संहरते। पर इतने से काम नहीं चलता। विषय चिंतन समूल नष्ट नहीं होता। साधक अपने मन को परमात्म तत्व में निश्चल स्थिर करने के लिए इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः निगृहीतानि सर्वशः परम आवश्यक है। जन्म जन्मांतर से जीव इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता आया है। इस कारण इंद्रियों की उनमें आसक्ति हो गई है। उनके विषय लोलुप स्वभाव को परिवर्तित कर देना, उनमें विषयासक्ति का अभाव कर देना और मन बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना, यही उनको उनके विषयों से सर्वदा निगृहीत कर लेना है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः निगृहीतानि सर्वशः। हे अर्जुन, निग्रह की हुई इंद्रियां अपना विष छोड़कर परमानंद रूपी अमृत का पान कराने में परम सहायक हो जाती हैं और ऐसे पुरुष की बुद्धि परमात्म तत्व में अटल स्थिर हो जाती है। उसके विचलित होने का स्वप्न में भी भय नहीं रहता। हे महाबाहो, तूने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं। तू तो शूरवीर है, पर युद्ध जीतना कोई बड़ी बात नहीं। रावण जैसे अनेकों राक्षस भी बड़े बलिष्ठ एवं शक्तिशाली रणबांकुरे शूरवीर हुए हैं, परंतु सच्चा शूरवीर वही है जिसने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूपेण निग्रह प्राप्त कर लिया है। Therefore, O mighty armed Arjuna, when the senses are completely controlled, the mind cannot wander widely in the sensual grooves. They should not be rendered defunct, but channelized in the right direction to help the aspirant to achieve Sthit Prajna stage. Gluttony and slavery to the tongue is sin. Eating to keep the body fit for a noble purpose is virtue. Beholding the body of a person with a lustful eye is sin. Viewing it as the temple of God is virtue. All the five senses can be sublimated, and the sense objects sanctified in such a manner that the divinity alone is contacted in and through all of them. Here Arjuna is addressed as mighty armed, which is a challenge to him that however great a hero he might be in the outer battle with arms against the heroic kings and chieftain of his age, he cannot be considered a real hero until he is able to control the senses completely and able to make his mind steady like a lamb in a windless place and established in the self. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ഹേ ബലവാൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ അഥവാ ലൗകിക ചിന്തകളെ തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ തന്നെ എല്ലാ രീതിയിലും നിഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ്റെ ബുദ്ധി സ്ഥിരമാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഹേ അർജുൻ, നീ നിന്റെ ബുദ്ധിയെ ഈശ്വരീയ ചൈതന്യത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ രണ്ട് രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കണം. ആദ്യത്തേത്, പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള പ്രേരണ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപേ എപ്രകാരമാണോ ഒരു ആമ തൻ്റെ അവയവങ്ങളെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യം നടക്കുകയില്ല. മറ്റു വിഷയങ്ങളിലുള്ള ചിന്ത സമൂലമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. സാധകന് തൻ്റെ മനസ്സിനെ ഈശ്വരീയ സത്തയിൽ അചഞ്ചലമായി
സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്നതിന് ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥീഭ്യ നിഗൃഹീതാനി സർവശുഹ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി ജീവജാലങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ വിഷയങ്ങളെ വസ്തുക്കളെ അനുഭവിച്ചു പോരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അവയിൽ ആസക്തിഭാവം ആയിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരുടെ അത്യാഗ്രഹ സ്വഭാവം ഇല്ലാതാക്കുക, വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതാക്കുക, മനസ്സിനെ ചഞ്ചലമാക്കുവാനുള്ള ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഇവയെല്ലാം അവരെ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അഥവാ ആസക്തരായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ്. അങ്ങനെ നിയന്ത്രണ വിധേയമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷം ഉപേക്ഷിച്ച് പരമാനന്ദ രൂപത്തിലുള്ള അമൃത് കുടിക്കാൻ ഏറ്റവും അധികം സഹായകമായി തീരുകയും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധി പരമാത്മാവിൻ്റെ സത്തയിൽ ഉറച്ച് സ്ഥിരമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അവന് മനസ്സ് ചഞ്ചലമാകുമെന്നുള്ള ഭയവും ഇല്ലാതാകുന്നു. ഹേ ബലവാൻ, നീ വലിയ വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ യോദ്ധാവാണ്. എന്നാൽ യുദ്ധം ജയിക്കുക എന്നത് അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. രാവണനെ പോലെ അനേക രാക്ഷസന്മാരും വളരെ ശക്തരായ യോദ്ധാക്കൾ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ യോദ്ധാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണോ അവൻ തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയവനാണ്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ. നിന്റെ ആഗ്രഹം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణ్. నా సద్గురు సందేశం. ఓ మహాబాహో, ఏ పురుషుని ఇంద్రియములు ఇంద్రియ విషయముల నుండి అన్ని విధములుగా నిగ్రహించబడినవో అటువంటి పురుషుని బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, నీవు నీ బుద్ధిని పరమాత్మతత్వమునందు స్థిరంగా నిలుపుకోవాలి అనుకున్నట్టయితే నీ ఇంద్రియాలపై 2 విధములుగా నియంత్రణ కలిగి ఉండు. ప్రప్రథమంగా పాపకర్మల యందు ప్రేరితము కాకముందే తాబేలు ఏ విధంగా తన అవయవములను ప్రమాదం జరగబోయేటంతలోనే లోపలికి ముడిచివేసుకుంటుందో అదే ప్రకారంగా నీ ఇంద్రియాలపై నియంత్రణ కలిగి ఉండి అలవాటు చేసుకో. ఇంద్రియాణి ఇంద్రియార్థేభ్య సంహరతే. అయితే ఇంతటితో పని జరగదు. విషయ చింతన సమూలంగా నశించదు. సాధకుడు తన మనసును పరమాత్మ తత్వమునందు నిశ్చలుగా స్థిరపరచుటకు ఇంద్రియాణి ఇంద్రియార్థేభ్య నిగృహీతాని సర్వశః అనగా ఇంద్రియములను ఇంద్రియ విషయముల నుండి అన్ని విధములా వశమునందు ఉంచుకున్నట అనేది ఎంతో ఆవశ్యకతమే ఉన్నది. జన్మ జన్మాంతరముల నుండి జీవుడు ఇంద్రియముల ద్వారా భోగములను అనుభవిస్తూ వస్తున్నాడు. అందుచేత ఇంద్రియాలకు వాటిపై ఆసక్తి కలుగుతోంది. వాటి విషయ లోలుప్త స్వభావనందు పరివర్తన తీసుకురావాలి. వాటి యందు విషయాసక్తి లేకుండా చేయాలి. మరియు మనసుకి బుద్ధిని విచలితం చేసేందుకు అవసరమయ్యే శక్తి లేకుండా చేయాలి. ఇంద్రియాలను అనేక విషయాల నుండి సర్వదా నిగ్రహం గావించడం అంటే ఇదే. ఇంద్రియాణి ఇంద్రియాభ్య నిగృహీతాని సర్వశః. ఓ అర్జున, నిగ్రహించబడిన ఇంద్రియములు తమ విషాన్ని విడిచిపెట్టి పరమానంద స్వరూపమైన అమృతాన్ని ఆస్వాదించడంలో అత్యంత సహాయకులు అవుతాయి. అటువంటి పురుషుని బుద్ధి పరమాత్మతత్వంలో చెలించక స్థిరంగా ఉంటుంది. అతనికి స్వప్నంలో కూడా విచలితుడు అవుతాడనే భయం ఉండదు. ఓ మహాబాహో, నీవు గొప్ప గొప్ప యుద్ధాల్లో విజయం పొందావు. నీవు గొప్ప పరాక్రమంతుడువు. అయితే యుద్ధమందు విజయాన్ని పొందుట గొప్ప విషయమేమీ కాదు. రావణుడు మొదలైన అనేక మంది రాక్షసులు బలవత్తరమైన శక్తివంతమైన యుద్ధములు చేసి శూరవీరులు అయ్యారు. కానీ నిజమైన సూర్యుడు ఎవరంటే ఎవరైతే తన ఇంద్రియములపై సంపూర్ణ నిగ్రహమును పొందునో అతడు మాత్రమే. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు. నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।